बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को डिस्कस करने जाएंगे और पता करेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस क्या है। An effective extension educational program involves five essential interrelated steps. This concept of extension educational process is intended only to clarify the steps necessary in carrying out a planned educational effort. It does not imply that these steps are definitely separate from each other. ये एक पिक्चर जो है, डायग्राम जो है, ये आपको बता रही है, लेकिन आप इसको टॉप से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको नीचे से शुरू करेंगे, जहां है सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, देन डिसाइड फॉर ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग प्लान ऑफ वर्क, एवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम वन बाय वन इन तमाम पांचों स्टेप्स को जो हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे। एक्सपीरियंस शोज दैट प्लानिंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूअसली in varying degrees throughout all phases of extension activities. The first step is the consist of collection of facts and analysis of situation, facts about the people and their enterprises, the economic, social, cultural, physical, and technological environment in which they live and work. These may be obtained by appropriate survey and establishing rapport with the people. तो यहाँ पे again याद रखें, मैंने क्यों उस वक्त कहा था कि रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिटी डेवलपमेंट के कामों में, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी किस चीज़ की ज़रूरत है उस कम्युनिटी के अंदर। तो देख लें, एक्सटेंशन एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पहले रिसर्च की ज़रूरत है। पहले स्टेप में जब हमें आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनका सोशल जो है, कल्चरल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। These responses obtained are to be analyzed with the local people to identify the problems and resources available in the community. बार बार इस चीज की, पूरे इस कोर्स में बार बार इस चीज की बात की गई है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ के लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से लोकल रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि बाहर से कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर after a survey in a community and analysis of the data, the problem was identified as low income of the farm family from their crop production enterprise. Second step क्या है? After the first step, जब हमने problem identification कर ली है, data को analyze कर लिया है, the second step is to decide on realistic objective which may be accomplished by the community. A limited number of objectives should be selected by involving the local people. The objective should be specific and clearly stated. जब मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड। उनको एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। And on the completion should bring satisfaction to the community. Objective should state the behavioral change in people as well as economic and social outcome desired. The third step, हमने जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लिए। द थर्ड स्टेप इज टीचिंग, विच इन्वॉल्व्स चूजिंग व्हाट शुड बी टॉट, कंटेंट क्या होगा जो हमने उन्हें पढ़ाना है, एंड हाउ द पीपल शुड बी टॉट, और कैसे पढ़ाना है, द मेथड्स एंड एड्स टू बी यूज, और उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स और मटेरियल्स को हमने यूज करना है। इट रिक्वायर्स सिलेक्टिंग रिसर्च findings of economic and practical importance relevant to the community, and selection and combination of appropriate teaching method and aids. Fourth step is evaluating the teachings. हमने जो कुछ सिखाया है उसकी evaluation करना है। evaluation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डेवलपमेंट का आप काम करें, उसके अंदर evaluation को एक बहुत मुकाम हासिल है। evaluation is very important. उसकी रीज़न क्या है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स रह गए हैं इस टीचिंग के अंदर, जिसकी वजह से प्रोग्राम को हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके अगली दफ़ा, ताकि हम उनको मॉडिफाई कर सकें। The fourth step is evaluating the teaching, determining the context to which objectives have been reached,
to evaluate the results of the educational program objectively. It is desirable to conduct a re-survey after the completion of that particular program. The evidence of चेंज बिहेवियर शुड बी कलेक्टेड, और अगर उन लोगों के बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आया है तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और ताकि वो इवेल्युएशन में मदद कर सके. The evidence of change behavior should be collected, which shall not only provide a measure of success but shall also indicate the deficiencies if any. ना सिर्फ जब हम रीसर्वे करते हैं, जो एक सर्वे हमने शुरू में किया था और एक अब करते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एजुकेशनल प्रोग्राम, तो हमें पता चलता है कि लोगों के बिहेवियर के अंदर कौन सी ऐसी चेंज आई है, और अगर चेंज आई भी है या नहीं आई है, उस प्रोग्राम की क्या क्वालिटीज हैं और क्या डेफिशिएंसीज रही हैं, ताकि अगला प्रोग्राम जो है फॉर्मुलेट करते वक्त इन डेफिशिएंसीज का ख्याल रखा जाए. The fifth step is reconsideration of the entire extension educational program on the light of the result of evaluation. The problems identified in the process of evaluation may become the starting point of the next phase of extension educational program. So reconsideration के में जब हम recommendations देते हैं, वो बेस बनती हैं अगले प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, unless new problems have developed or new situation have been arisen. Thus, this continuous process of extension education shall go on, resulting in progress of people from a less desirable to a more desirable situation. So, extension education का मकसद ये है कि आपको एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निकाल कर एक बेहतर सूरत हाल में लेके जाएं और आपको वो टीच करें जिसकी ज़रूरत है.